CBME. CBME means competency based medical education. What means about this? The competency means competent होना. Competent means होना कि अगर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक आपको डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है तो उसके एवज में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, पेशेंट, आस पड़ोस वाला आपसे कोई राय लेना चाहे तो आप उससे बता सकें और इतने कॉम्पिटेंट हो सकें कि उसको इन प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें. तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन का पर्पज सिर्फ यही है कि आप टू बी कॉम्पिटेंट एवरी टॉपिक. तो हियर इज ए concise form discuss about the CBME. What are the key highlight of the CBME guideline 2024? This is a outcome oriented curriculum. Outcome oriented curriculum. Outcome oriented curriculum. What means of this? It focuses on the producing Indian medical graduates, IMGs, who are the clinically competent, ethically grounded, and they responsive to the societal needs. Just like जैसे अभी just पहले डिस्कस किया कि क्लिनिकल कॉम्पिटेंट हो, कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप क्लिनिकली उसको परफॉर्म करने में आप कॉम्पिटेंट हो. लाइक दैट कि आप अभी एडमिशन लेंगे, आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जो कि बेसिक मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट है. इन केस आपको इतने कॉम्पिटेंट हो कि अगर ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज है, हाई है, तो आप उस कॉम्पिटेंसी के बेस पे किसी भी मरीज का एटलीस्ट कम से कम एडवाइस तो दे ही दें इन फर्स्ट ईयर कि उसे क्या करना चाहिए. मेडिसिन नहीं तो कम से कम आप उसको रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं. रिगार्डिंग उसके वेट अगर ज़्यादा तो उसको जो है लॉस करने के लिए बोल सकते हैं. मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द काज बिहाइंड द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. इतना आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए. बीपी लो के केस में भी आपको क्या करना चाहिए ये भी आप कॉम्पिटेंट इन फर्स्ट ईयर एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. एथिकली ग्राउंडेड मीन्स कि आपको उसकी एथिकल्स भी पता होनी चाहिए. एंड देन द थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिव टू द सोसाइटल नीड्स. क्या ज़रूरत है हमारे सोसाइटल को? सोसाइटल नीड्स. क्लिनिकल कॉम्पिटेंट, clinical competent, and then the ethical grounded. Okay, there are 3 phases of the MBBS structures. आप जब एडमिशन लेंगे तो उसमें 3 phases होंगे आपके पास में. 3 phases होंगे. फर्स्ट फेज फर्स्ट आपका 12 मंथ का होगा. फेज 2 आपका 12 मंथ के होंगे.
एंड फेज 3 आपका 30 मंथ का होगा, 30 मंथ्स का होगा. We will discuss about the phase 1. What are the subject which you will be study in phase 1 in 12 months? The basic science. In first year subject is basic science, anatomy, anatomy, physiology, and biochemistry, and one is subject is plus forensic medicine. Forensic medicine. Okay. Anatomy, physiology, biochemistry plus forensic medicine. These are the subject of the first phase of the MBBS. What are the subject of the second phase of MBBS? Second phase, phase second, which duration is 12 months also. 12 months. The subject is pathology, pathology, microbiology, microbiology, and then the pharmacology, pharmacology. Okay. Oh, sorry. Pharmacology. Pharmaco. Okay. And then we will discuss about the phase 3, which duration is phase 3 duration is 30 months. 30 months. In phase 3, the phase 3 is split in two parts. Split in two parts. Phase 3 is split in two parts. Part first, and part second. Okay. In part first, the subject is forensic medicine, forensic medicine, and the ENT, ear, nose, throat, ENT, and ophthalmology, ophthalmology. Okay. And in part two, the subject will study medicine, medicine, surgery, and pediatrics. Surgery and pediatrics. Okay. So we have discussed about phase 1, phase 2, and phase 3. Also, the after that, a second one thing is what is the competency based training. Competency based training. The second thing is competency, competency based training. Competency based training. The in competency based training means the subject specific competencies. Subject specific. The competency based training is divided in the part of the subject based study. First thing. Second thing, a 8 com module. 8 com module.
ADCOM model. It is very important. Third one is adopt family adoption program. Family adoption program. And fourth is learner doctor methods. Learner doctors method. So remember it, the competency based study. The key highlights is outcome oriented curriculum, three-phase MBBS structures, and second is competency based training in which the specific subject specific competencies, ADCOM module, family adoption program, and learner doctors method. So I will discuss about one by one. The what is the subject based training? Subject based study. What is the subject based study? One thing is what is the subject based study? The subject based study, it is clear defined for each phase, replacing the broad competency. The subject based study means in which the clear about each competencies, each competencies. In the ADCOM module, second one is ADCOM module. What is a ADCOM module? It is longitudinal integration of, it is longitudinal longitudinal integration of integration of attitude A for attitude, ET for ethics, attitude, ethics, and COM for communication. Okay, so ADCOM means the ethics, ADCOM means attitude, ethics, and communication. A E T and COM, ADCOM. Okay, then third is family adoption program. Family family adopts adoption program, adoption program in which student adopt a family, in which a student adopt a family adopt a family to understand the public health, to understand the public health, and the social medicine first hand, and the social medicine first hand. First, fourth one is learner doctor method. In this, the clinical clerkship model of the hand-on experience. Learner doctor method, in which uh, develop the clinical clerkship model for
hands on experience, hands on experience. Okay, hands on experience. Third point under the CBME, the assessment and passing criteria. Assessment, assessment and passing criteria मीन्स कैसे आपके असेसमेंट होंगे, जो आप लिखते हैं एग्जाम में, आप जो पढ़ते हैं उसके असेसमेंट कैसे होंगे। और सेकंड थिंग इज पासिंग क्राइटेरिया, कि पासिंग क्राइटेरिया क्या एनएमसी ने और यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है। तो असेसमेंट, द कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट ऑफ असेसमेंट मेथड इज कंटिन्यूअस internal assessment. Continuous internal assessment include, in this you will conduct seminar, assignment, making the assignment, and case presentation. Case presentation. Okay. And second is revised based marks. Revised based marks. अब आप कितने नंबर पाते हैं, रिवाइज्ड बेस्ड मार्क्स की मैक्सिमम कितने नंबर पे आप पास हो जाएंगे, कितने नंबर पे आप फेल होंगे। तो देयर आर 40% एग्रीगेट फॉर सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर में आपके टोटल 40% एग्रीगेशन होना चाहिए, एंड 50% एग्रीगेशन इज मस्ट एग्रीगेट इन theory plus practical in distribution about 60 plus 40 or 40% plus 60%. ओके, मीन्स आप अगर प्रैक्टिकल में थ्योरी में 40 पा रहे हैं और प्रैक्टिकल में आपको 60 मिल रहे हैं या 70% मिल रहे हैं तो आप पास, या और आपके 40 भी मिनिमम पासिंग मार्क हैं रिटन में और 40 मिनिमम पासिंग मार्क आपके प्रैक्टिकल में, बट ओवरऑल आपको 50% पाना है। ओके, तो 50% एग्रीगेट है, 40 सेपरेट, एंड विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आपका 50% एग्रीगेशन। ओके, then we discuss about the competency based training, also discuss and passing criteria, and there the attendance requirement. Attendance is also a internal marks. So attendance requirement for the eligible to appear university examination, the attendance requirement of 75% in theory classes, and 80% in practical classes. ओके, तो 75 एंड 80% आपको अटेंडेंस देनी है, फिर थ्योरी में आपको 50% देनी है, और सॉरी थ्योरी में आपको 75% देनी है, और प्रैक्टिकल में आपको 80% अप्रॉक्सीमेटली वो आपको देनी ही देनी है।
So these are the briefly explanation of the CBME guideline competency based medical education. आप एडमिशन के बाद कैसे पढ़ते हैं, आपको क्या क्या क्राइटेरिया को पढ़ता है करना होता है, तो वी विल रिवाइज, वी हैव द रिवाइज्ड अगेन and repeat and recap the same thing briefly or fast. First half of the you again welcome and most welcome to take the admission in MBBS classes, and your syllabus and your pattern for the study on the depend on the CBME guideline in 2024, which is released by the NMC. In the this guideline, some key highlights of the CBME is outcome oriented curriculum, जिसमें outcome oriented curriculum means है कि जिसमें आपको मैं इस हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि आउटकम कुरिकुलम जो फोकस है, जो प्रोड्यूसिंग करता है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एंड और बनाता क्या है। अगर हम आउटकम ओरिएंटेड करिकुलम है एक टाइप का CBME, जिसमें हम क्लिनिकल कॉम्पिटेंट बनते हैं, एथिकली हमको ग्राउंडेड होते हैं एंड प्लस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं सोशल सोसाइटल नीड के, जो सोसाइटी को ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। एंड 3 फेज होते हैं MBBS स्ट्रक्चर के स्टडी में। फेज 1 जस्ट लाइक आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो बोलते हैं, NMC ने उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। 12th मंथ का एक फेज रखा है, एक फेज अगेन 12th मंथ का रखा, और थर्ड फेज जो है वो 30 मंथ का रखा। तो फर्स्ट फेज में आपको 12th मंथ में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्लस फॉरेंसिक मेडिसिन रखा है, और फेज 2 में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। एंड फेज 3 में आपको 30 मंथ्स का रखा है, और इसे फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट के जो सब्जेक्ट होंगे वो फिर फॉरेंसिक मेडिसिन प्लस ENT ऑप्थेल्मोलॉजी ये होंगे। सॉरी, फर्स्ट फेज में एक और आपके पास में आता है, वो फाउंडेशन कोर्स होता है। First phase, this is a first phase. One thing is plus no, for not forensic medicine, sorry for that, the forensic medicine first phase for the foundation course, and the phase 2 my pathology and microbiology and pharmacology, and phase 3 may split in 2 part, the forensic, ENT and ophthalmology and community medicine. Okay, then the ophthalmology, and then the second may ophthalmology community medicine, also community medicine, and part second medicine, surgery and pediatrics. The competency based training, and then the second highlights is the competency based training, the subject specific competency, इसमें आपको अलग अलग competency दी जाएंगी। competency के अलग अलग एक टॉपिक के कोड होंगे, उस कोड को आपको पढ़ना होगा, और उस कोड में ही आपकी competency दे रखेगी कि you will after this chapter you will able to the complete to perform the this competency, है ना। तो उसमें आप जो आपका कोड होगा उसको पढ़ने के बाद आप कॉम्पिटेंट किस एरिया में होंगे, किस चीज़ में कॉम्पिटेंट बनेंगे, और आपको उसमें क्या क्या आपको कोड की टॉपिक पढ़नी होगी कि आप उस परफॉर्मेंस के कॉम्पिटेंट बन जाएं। इसी तरह से फिर एडकॉम मॉड्यूल है। एडकॉम मॉड्यूल एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन दिखाता है, जो री इन्फॉर्मेंस करता है आपके प्रोफेशनलिज्म को और एम्पैथी को। Okay, this is a longitudinal integration, and the family adaptation longitudinal integration means ये एडकॉम मॉड्यूल आपके पास में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी के साथ में ही रन करते हैं, साथ में ही चलेंगे। एंड फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम आपको जो है कम्युनिटी मेडिसिन में जाना होगा, और आपको फर्स्ट ईयर से आपको अपने अपने प्लेस में आपको ये फैमिली का अडॉप्ट करना है। एक सिंगल स्टूडेंट को एक सिंगल फैमिली अडॉप्ट करनी होती है, और उसके हेल्थ के बारे में उसको अवेयर कराना होता है। ओके, and then the learner doctor method, the clinical clerkship model for the hand on the experience।
तो इसको जो है लर्नर डॉक्टर मेथड्स में आपको स्वयं जाके खुद ही जाके आपको अपना वो असेसमेंट करना होगा और क्लर्कशिप मॉडल बनाना होगा। एंड द असेसमेंट पासिंग क्राइटेरिया, द एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए है जो असेसमेंट हो, कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट होंगे। इंटरनल असेसमेंट आपके इंटरनल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेंगे, सेमिनार्स पे करेंगे, असाइनमेंट पे, केस प्रेजेंटेशन पे होंगे। एंड देन द और पासिंग मार्क्स के लिए 40% मार्क्स आपको थ्योरी में लाने होंगे, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मिला के। एंड 40% मार्क्स प्रैक्टिकल में है पासिंग मार्क्स, बट ओवरऑल आपको 50% लाने होंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। एंड अटेंडेंस रिक्वायरमेंट 75% अटेंडेंस आपकी मस्ट है इन थ्योरी क्लासेस में, एंड 85% आपका मस्ट है प्रैक्टिकल क्लासेस में। एंड एडिशनल फीचर्स में आपकी जो है वो डिसेबिलिटी इंक्लूजन है, अपडेट गाइडलाइन अंडर द राइट्स एंड पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड डिटेल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टीचर्स आर क्लिनिकल पोस्टिंग एंड असेसमेंट फॉर्मेट आर क्लियरली आउटलाइन करनी रहती है। Okay, so then I think this is sufficient and brief for the Cbme guideline, and in next lecture we will discuss about the effect of the guideline on the MBBS student also, and what is the family adaptation program, and what is the previous medical education standards, है ना। तो इस पे हम बात करेंगे अगले चैप्टर पे कि और एडकॉम मॉड्यूल्स की, एडकॉम मॉड्यूल से आप में क्या फ़ायदा है, सीबीएमई गाइडलाइन जो है इसके जो की हाइलाइट्स हैं वो क्या बेनिफिट देते हैं आपको और क्यों आवश्यकता। तो हमारे अगले ये चैप्टर लेक्चर और अगला लेक्चर आपका करिकुलम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन पे ही डिपेंड रहेगा। Then we will start our subject and favorite and important subject which you will study in the first year MBBS, anatomy। anatomy ये एक आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा anatomy, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको नोन होते हैं, लेकिन anatomy एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट नंबर पे है और प्लस आपको होल सोल अपनी पूरे MBBS